Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंदा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदारेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो श्री राधे गोलोकानंद भगवान की Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Nisha. जय श्री कृष्ण। Hare Krishna, Reena ji. Hare Krishna, Hare Krishna, everyone. Cool. So, अध्याय 6 पढ़ रहे हैं अपन। नारद जी, देव ऋषि नारद जी व्यास देव जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और व्यास देव जी का प्रश्न था कि आपके इस अवतार के बारे में बताएं और जो भी हुआ उसकी हिस्ट्री। सो आई थिंक वी हैव बीन गोइंग थ्रू दैट। और कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी निद्रा में गए तो गर्भोदक्षाय विष्णु की निद्रा में उन्होंने भी विश्राम किया फॉर some 432 billion or maybe more number of years. So now the next slok 1.6.30 सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं शिक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो अहं च जगशिरे. After I think it's 4.3 or maybe more 4.3 billion. Billion. No, it's a billion actually. So after 4.3 billion solar years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri and so on were created from the transcendental body of the Lord. And I also appeared along with them. So ब्रह्मांड की वापस से रचना हुई तो नारद देव ऋषि नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान की ट्रांसेंडेंटल बॉडी, लॉर्ड विष्णु की जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी गर्भोदक्षाय विष्णु की, उस बॉडी से ऋषि उत्पन्न हुए, अंगिरा, अत्रि एंड मरीचि, एंड देव ऋषि नारद also appeared along with them. When did this happen? Sahastra Yug. So here Sahasra is 1000, Yug is 4.3 million. So that together it's 4.3 billion. Right? So Sahasra Yug Paryante. So after Sahasra Yug, Pranebhyo, यानी भगवान की ट्रांसेंडेंटल बॉडी से अहम इस श्री नारद ऋषि च जगशिरे प्रकट हुए. अनिल जी. अंतर्बहिश्च लोकांस्त्रीन् पर्येम्यस्कन्धि व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर्विघात गति क्वचित्. Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction,
both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. So इसमें देव ऋषि नारद करें unbroken devotional service of Dev Rishi Narad, and because of that, Dev Rishi Narad can travel everywhere. And when you say everywhere, where? Right? Both in the transcendental world and also in the three divisions of the material world. So we are living in the material world, right? What are the three divisions of the material world, right? They call it like the upper, middle and the bottom. But this material world has कितने धाम है material world में? ये जो अपन देवी धाम बोलते हैं, right? We read in Sri Brahma Samhita. इसमें we had like 14 dhams, right? So we have Prithvi Lok in the middle, 6 above us and 7 lower loks below us, like Patal Lok is the lowest. And the highest lok in this Devi Dham is, what is that? Brahma. Brahma Lok, right? So Brahma Lok is also called as Satya Lok. So that is the material world. And beyond this material world, as we had studied, there is Vaikuntha Dham and Lord Vishnu's Dham. And so that is the spiritual world. Okay, so we got the material world and the spiritual world. But Sri Narad Muni, he can travel in this material world as well as in the transcendental world without any restriction, and that can happen because Dev Rishi Narad has got unbroken devotional service. And it's mentioned, right, in the previous shlok that Angira Rishi and other rishis also appeared along with Sri Narad Rishi, but only Narad Rishi can travel in transcendental world freely because of the undevotional service. The other rishis were said like they are highest in Sakam and other things, but the unbroken devotional service is only of Dev Rishi Narad. Hare Krishna, Shikshan Prabhuji. Hare Krishna. Mukesh? Devadatam imam Vinam Swar Brahmavi Vibhushitam Murchiyatva Harikatham Gayaman Shrayam Mayam. And thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called a veena, which is charged with the transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. Right. So we see, right, Dev Rishi Narad's veena, we have seen always what is the transcendental sound which comes out of Naradji's veena? Narayan, Narayan. Narayan, Narayan, right? So we all have heard that so many times. Who gave that veena to Dev Rishi Naradji? Lord Krishna. Lord Krishna, right? Dev Datta Mimam Veenam, right? Lord Krishna himself gave the veena, right? And so what is happening? Hari Katham, Gayaman, yeah? So constantly singing the transcendental sound, constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord. So that's what Dev Rishi Narad is. Naju? Yeah. Pragayata Swaviryani Tirthapada Priyashrava Ahut Iva Me Shigram Darshanam Yati Chetasi. The Supreme Lord Sri Krishna, whose glory and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart as if called for as soon as I begin to chant his holy activities. Hare Krishna. Hare Krishna. I mean, in the previous chapter we are reading, right, that Lord Krishna appeared once to Sri Naradji and then he did not appear after that in the previous birth of Dev Rishi Narad. But once he achieved the unbroken devotional service, as soon as his glories and activities are heard, no,
Lord Krishna appears at the seat of Devrishi Narad's head. Ahut iume shigram darshanam. As soon as that happens, Lord Krishna appears. Shigram darshanam. Ajay? Etadhya atura chittanam matra sparshechya mu bhav sindhu plavo drishno haricharya nurvarnanam. It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat. The constant chanting of the transcendental activities of personality of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. I mean, look at the Srimad Bhagvatam, right? Dev Rishi Narad is sharing the personal experience. And what is the personal experience of Dev Rishi Narad ji? Is Bhav Sindhu Pallavo. Like Bhav Sindhu, हम लोग बोलते हैं ना Bhav Sindhu को पार कर जाते हैं. So Bhav Sindhu Pallavo, how? Hari Charyanu Varnanam. So it is personal experience of Dev Rishi Narad ji that we can cross this ocean of nescience on a most suitable boat. And how do we do that? How can we do it? Is Hari Charyanu Varnanam, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. This is the personal experience of Dev Rishi Naraji, which we are hearing through Dev Rishi Naraji's talking to Vyas Devji, right? In Srimad Bhagavatam. So wonderful. Nisha? यमादिभिर योग पथे कामलोभ तो मोह मुकुंद सेवया यद्वत्थात्माधान शामति. It is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbance of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul. For this satisfaction is derived from devotional service to the personality of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. I mean, there's so many arguments and so many discussions, right? We have so many brahmacharis who do yogas, right? Who do the self, who also get the self-realization, right? Atma Sakshatkar bhi hota hai unko. And then they are able to achieve the restraint of the senses. So by doing the yoga system, by doing the brahmacharya ashram, doing the meditation, self-realization, they can get restraint of the senses and they can get away from the disturbance of the desire and lust, which means they can get away from the material disturbances. So that can happen. So Yamadi Bhyor Yog Pathe hai, right? If you are following the yoga and meditation, Kamalo Bahato Muhu. So Kam Lobh can get away. But what it is saying is that even though you can achieve all that, it doesn't give satisfaction to the soul, right? The satisfaction to the soul is only way is derived from devotional service to the personality of Godhead. Mukunda Sevaya, clearly written in Srimad Bhagavatam. I mean, the topmost rishi is Dev Rishi Narad. जो देवताओं के ऋषि है वो नारद जी है, वो कह रहे हैं, he is saying that the only way to get satisfaction to the soul is the devotional service to the personality of Godhead. Mukunda Sevya Yaddatvat Atma Va Na Shamyat. Ravi?
Ravi, will you read? Yes, yeah. सर्वतदीमख्यातं यत्य पृष्टोऽहं त्वान्यग जन्म कर्म रहस्यं मे भवत श्रुत्यात्मतोत्पषणम्. O Vyasadeva, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization. As you asked, all this will be conducive for your personal satisfaction also. Hare Krishna. Also, right. So why is Dev Rishi Naraji is telling all this? Okay, because Vyasdevji, who himself is also an incarnation, has asked about the birth and activities of Dev Rishi Naraji. Yeah. So you see, Janma Karma Rahashyam of Dev Rishi Naraji. Okay. So we also read that now. Rasik Shyam Prabhu ji? मुझे बोल रहे हैं हाँ. हे सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतं आमन्त्रय वीणारण्यं ययौ अदृक्षिको मुनिः. Sut Goswami said, thus addressing Vyasadeva, Sri Narada Muni took leave of him and, vibrating on his veena, the transcendental instrument, the veena instrument, he left to wander at his free will. Right. So after, so Sut Goswami ji is of course telling this all to the rishis who have gathered at which place? Naimisharanya. Naimisharanya, right? Naimisharanya is the place where all the rishis have gathered. Sut Goswami ji is reciting all the 18,000 shloks which Vyasdev ji in himself had manifested and told to Sukdev ji Maharaj, right? And so what we have read is Srila Narad Muni's appearance and how his birth took place and how he's in this whole world and vibrating on his veena instrument Narayan Narayan Veenam Ranyan, right? And the instrument has been given to Sri Narad Muni by whom? Krishna. Right? Lord Krishna. Lord Krishna himself has given this instrument to Sri Narad Muni. Aho Dev Rishi Dhanyo Ayam Yata Kirti Shangar Gadhanvanah Gayan Madhyan Indanam Tantramayatya Jagat. So all glory and success to Srila Narad Muni because he glorifies the activities of the personality of Godhead. And so doing, he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. Right? So we are all like the distressed souls of this universe. We don't even realize our soul, right? But we get enlightened by the glorification, by the activities of the personality of Godhead, right? And that is also is the success to Sri Narad Muni ji. Yeah. So I think this is the end of this chapter. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 6th chapter of the Srimad Bhagvatam called Conversation between Narada and Vyas Muni. Yeah. So बोलो श्री नारद देव ऋषि नारद जी की जय, Jai. श्रीमद् भागवतम की जय. Jai. So this is the 6th adhyay we completed and
So Rasiksham Prabhuji, would you like to summarize, say anything about Adhyay 6? Or anyone? Yes, Prabhuji. इस पूरे अध्याय में जहाँ पर नारद मुनि, उसका शीर्षक है, इंटाइटल क्या है इसका, नारद मुनि क्या कर रहे हैं, श्रील व्यास देव से बातचीत कर रहे हैं, उनको अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहे हैं। व्यास देव कौन है? इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने पहले भी बताया, अभी मैं उसको बता रहा हूँ। श्रील व्यास देव भगवान के शाक्तावेश अवतार कहे जाते हैं, जो उस समय इसलिए प्रकट हुए थे, भगवान व्यासदेव के रूप में इसलिए प्रकट हुए थे कि इससे पहले लोगों की स्मृति इतनी अच्छी थी कि सुनने के बाद ऑटोमेटिक लोग याद कर लेते थे। लेकिन कलयुग में हम लोगों का जो बुद्धि शक्ति, जब आप पढ़ेंगे भागवतम में ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है, तो सब क्षीण हो गया, कम है। इसके लिए वो आए और हाथ उन्होंने लिखा, शास्त्रों को कंपाइल किया। तो शास्त्रों को कंपाइल करने के बाद आपने देखा वो अंदर से सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे थे, तो नारद जी आए बीइंग एज हिज गुरु। तो हमको यहाँ पर एक गुरु के महत्व का पता चलता है कि हमारे हार्ट में एक शुद्ध प्रामाणिक गुरु का कितना आवश्यकता है। जैसे नारद व्यासदेव भगवान के अवतार होते हुए भी उन्होंने एक गुरु स्वीकार किया, और आगे आप देखेंगे स्वयं भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं। तो हमको इसको यहाँ पर एक गुरु के महत्व का पता चलता है। तो नारद मुनि ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि ये जो मुझे ट्रांसेंडेंटल दिव्य शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे दूसरे जन्म में प्राप्त हुआ है। इसके पहले मैंने इस प्राप्ति हेतु मैंने बहुत सारी तपस्याएं की हैं। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो एक जो महिला थी, उनकी माता जी थी, वो शी वॉज नॉट फ्रॉम हायर कास्ट, शी वॉज फ्रॉम लोअर कास्ट। इससे एक रीति हो गया कि भगवान की जो भक्ति है ये कास्ट के ऊपर आधारित नहीं है, भगवान की भक्ति सबको मिल सकती है। और फिर दूसरा उसमें उन्होंने वेदांती जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनका उन्होंने सेवा किया और उनका जो उपदेश था उसको उन्होंने ग्रहण किया। तो नारद मुनि सेवा और साधुओं को उपदेश को ग्रहण करने के पश्चात उनको उन्होंने फॉलो किया, उनके उपदेश को फॉलो किया, और उसके बाद उनको क्या हुआ, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, जो आप लोगों ने पढ़ा है। एक चीज इसमें, जब उनके माता को सर्पदंश सांप ने काट लिया और उनकी माता ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा हर परिस्थिति को पॉजिटिवली लेते हैं, वो भगवान का क्या मानते हैं, भगवान का कृपा मानते हैं। और जब नारद मुनि फ्रीली ट्रेवल करने लगे तो भगवान ने क्या किया, जब वो मेडिटेशन के लिए पहली बार बैठे तो भगवान ने अपने हृदय का ग्लिम्स दिया, उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनको ग्लिम्स दिया अपना दर्शन का। यानी ये बोलिए कि जो दिव्य यानी आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो शक्ति है, दिव्यता है, उसका भगवान ने एक ट्रेलर दिखाया, भगवान की दिव्यता का एक ट्रेलर दिखाया। और जैसे भगवान का छोटा शॉर्ट टाइम दर्शन, अर्थात वो ट्रेलर से नारद मुनि व्याकुल हो गए, उनके और दर्शन, उनके और संग जब लालायित हो गए, तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उनको उपदेश दिया कि आप इस जन्म में पूर्णतः भक्ति करके जब शुद्ध होवोगे तो अगली जन्म में क्या होगा, आपको मेरी भक्ति प्राप्त होगी और मेरा दर्शन मिलेगा। और फिर नारद मुनि भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और ऐसा भक्ति करते करते पूरा युग का अंत हो जाता है। और फिर भगवान विष्णु के सांस लेने से, जब भगवान विष्णु भगवान सांस अंदर खींचते हैं तो प्रलय आता है। जब भगवान विष्णु ने सांस खींचा तो ब्रह्मा समेत समस्त जीव, सारी सृष्टि भगवान के उदर में यानी उनके स्टोमक में समाहित हो गए। और वो भगवान जब सांस वापस छोड़े, यानी ब्रह्मा जी का एक रात बीत गया। और
फिर तब ब्रह्मा जी आए, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर क्रिएशन शुरू हुआ, तब नारद मुनि भी प्रकट हुए। तब उनके पास वो कौन सा शरीर था, जो शरीर आज हमारे पास अवेलेबल है, भगवान नारद जी का जो दिव्य शरीर था। और फिर इस चैप्टर के अगले सेक्शन में नारद जी ने भगवान की भक्ति, उन्होंने बताया भगवान की भक्ति और भगवान के नाम का महत्व बताया है। और वह बोले कि मैं जब इनको फॉलो किया तो मेरे हृदय में, मेरा हृदय चित्त मार्जन हो गया। यानी मेरे पास जो हम लोग कष्ट उठाते हैं हमारे लस्ट और डिजायर के वजह से, यानी इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो कष्ट उठाते हैं, ये सारे जो विकार हैं, षड विकार जिसको होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कृष्णा प्रभु जी भगवान के नाम में शुद्ध हो 1 जाएंगे। मिनट, तो या प्रभु जी 1 मिनट है, अभी खत्म करते हैं। हाँ, शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध होने के बाद भगवान कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए। और फिर नारद मुनि ने ये सब बताया, भक्ति का स्थापना की और बोले कि अब आगे, और वो आगे चले गए। तो ये